Well, really back from what? Back from passing my days procrastinating all the time and not getting shit done. Back from a series of inconsistencies. Starting of this year has been a complete roller coaster ride for me, as I had expected. Initially, I was earning money in exchange for my skills, but that to stop because of me being inconsistent. Not practicing my skills and taking them to the next level so that I could leverage it more to earn money. मैंने एक चीज अपने साथ देखी है, पता आप लोग के साथ होता है कि नहीं? Like whenever I start doing something, I am too much obsessed with it. और अगर उससे मेरे को कोई रिजल्ट्स नहीं दिख रहे तो मैं एकदम से कुछ और चीजें करने लग जाता हूँ ड्यू टू द शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया फॉर दिस। और इसके बारे में आई एक्सप्लेन इन अनदर वीडियो कि हाउ टू नेग्लेक्ट सोशल मीडिया फॉर योर बेटरमेंट। वो पता लगा कि मैं आजकल फिर से कुछ ज्यादा ही सोशल मीडिया यूज कर रहा हूँ, लेकिन इसको अवॉइड करना मुझे आता है क्योंकि मैंने कर रखा है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी हार्ड फॉर मी द नेक्स्ट टाइम। और अगर मैं जो काम करता हूँ उससे कोई रिजल्ट दिख भी जाते हैं तो मैं एकदम से रिलायंट हो जाता हूँ, एकदम से कंफर्टेबल हो जाता हूँ कि अरे यार मेरे को तो ये आ गया, मैं क्या ही सीखूंगा इसे, और मुझे सब कुछ आता है। एंड देन रियली टेक इट्स हार्ड। इस सेम एग्जैक्ट चीज के बारे में ईमान गाजी ने भी अपने एक वीडियो में जिक्र किया था। इवन इफ वी आर नॉट सीइंग द रिजल्ट्स एज वी आर एक्सपेक्टेड, वी शुडंट गिव अप ऑन इट बिकॉज़ वी ऑलरेडी कम अ लॉन्ग वे एंड जस्ट एज वी आर अबाउट टू सी द रिजल्ट्स वी गिव अप एंड शिफ्ट ऑन टू द नेक्स्ट बिग थिंग and the cycle repeats itself. तो इस वीडियो का सबसे बड़ा टेक यही होगा कि if you actually want to achieve something in life, you have to accept the fact that you have to go a long time without seeing any results. And even after seeing some results, do not ever get comfortable or complacent and think कि यार मेरे को तो ये आता है, मैं क्या ही और सीखूंगा. And that to the skill which you're learning or building something in should be actually worth it. मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड बहुत हाई थी पिछले 15 सालों में, लेकिन अभी उसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का डिमांड बहुत हाई है जिसे एआई यूज करना आता है। आई थिंक यू गेट मी। सो दिस इज नॉट अ लेसन फ्रॉम दिस वीडियो, दिस इज अ लेसन फॉर लाइफ माय फ्रेंड, एंड ट्राई टू प्रीच दिस एज मच एज पॉसिबल। अगर आप कुछ भी चीज स्टार्ट कर रहे हो या फिर ऑलरेडी करते आ रहे हो और आपको पता है कि इस चीज में पोटेंशियल है, तो उसको कंटिन्यू रखना यार। भले ही तुमको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, but just put one step in front of the other and definitely one day you will see the results more than you are expected. And you might have also heard this thing that it's okay to fail if you have tried your best, but if you actually give your best, you can never fail. और हर बार की तरह stay safe, keep winning, and see you in the next video. Bye bye.